हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 11th के लिए। हम लोगों ने जर्नल एंट्री का चैप्टर स्टार्ट कर दिया एंड वी वर डूइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन द प्रीवियस few classes we had done what is the traditional approach of classifying the accounts into three different categories. We had also exercised one question where we had classified various types of accounts into the three modern classifiable approach, and now in the this class we are going to see how to segregate the accounts as per the modern approach. Means I'm talking about segregation of accounts into assets, into expenses, into income, liabilities and capital. So let us start. Here is the list of accounts. Here total 25 accounts are there in front of you. You can see a lot of accounts are there, so we will get a good practice from here. So these 25 accounts, we are going to classify them into different categories. Okay, we will write them into revenue account, into income account, revenue or income account, expenses account, asset account, liabilities account and capital account. Okay, so what you can do, you can make 5 columns in your notebook, and in those 5 columns you will keep putting this accounts. Okay, so like I am making over here, I am making revenue account, I am making assets account, I am also making liability account, I am making expenses account and capital account. And the capital account, the least things are going to come, and in rest of the accounts more things will come. So first of all we have computer. Computer is an asset. If you think about computer, computer is an asset. Okay, why? Because computer, whenever you buy the computer, the benefit of computer will be for a longer period. It will enhance the profit earning capacity of your business. So this is what the definition of asset is. Okay, bills receivable. Bills receivable means your debtor must have given you bills receivable, and this bills receivable will fetch you money in the future. So this is also a account which is your asset account. So bills receivable is also going over here. Bills receivable account I have written here under asset account. Then freight. What is freight? Just think, is freight an asset? Answer is no. Is freight a liability? No. And is it a capital account? No. Is it revenue? No. So what is left? Left is expense. Freight is an expense. So freight account we are going to write over here. Freight account is an expense account. It's a name of an expense account. Then amidst capital. So capital account is always capital account only. Amidst capital or whatever is the name of business owner. Okay, amidst capital account will be under capital account. Livestock. Now what is livestock? Livestock means in some businesses some cattle are used. Okay, so that is called livestock. So where should livestock go? Livestock is an asset. So livestock we will write under the asset account. See, what is asset? First of all, you understand that asset is anything which enhances the production capacity, profit earning capacity of your business, and that is for the purpose of using it in the production or for providing the services or into the trading, not for the purpose of reselling it. It is being acquired, then it will be called an asset. अगर आपने कोई चीज खरीदा and that is for the purpose of reselling it, that may not be your asset. Okay, then rent received. Rent received is what? Rent received is obviously not an expense, it's not a liability, it is not capital also, it is a income. Okay, so when it is income, it will go to the revenue account. So anything which is being received in the form of income goes to the revenue account. So rent received account. Then outstanding rent. What is outstanding rent? Outstanding rent is a liability. Rent outstanding ho gaya hai, but we have not yet paid. So these kind of things are called liability. So outstanding rent account will go to the liability account. Outstanding rent is liability. Then you have electricity bill. Any expense is to be put under the expenses account. So electricity bill हुआ, carriage हुआ, या फिर और भी किसी तरीके का बिल हुआ, that all will come under the expenses account. Land and building. Land and building, what it is? It is an asset, because land and building is the place where your business premises is there. So land and building is obviously an asset.
and it is not for the purpose of reselling, then it will be called an asset only. Then sundry creditors. Who are the creditors? People to whom we have to pay something, what we owe to others. So this is called your liability. So creditors are your liability. We will put it under the liability section. So we have done till 10. Let's go ahead and see what is there. 11th is sundry debtors. So when we talk about debtors, so debtors means what? Asset. Who will pay you the money is called your sundry debtors. Okay. So here I am going to write sundry debtor under the asset. Sundry debtors are your assets. Then you have discount received. So like your rent received, discount received is also income. Discount received is what, children? Discount received is an income. ओके. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. जब भी हम कोई फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा. बहुत बार बच्चे इंटरेस्ट शब्द देख करके सोचते हैं इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑलवेज. नो, interest is not always to be paid. Interest is received also. So what is happening? Interest is being received by you. Okay, so interest on fixed deposit will be received. Interest on FD लिख देती हूँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. ओके. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज डेफिनेटली एन एक्सपेंस. Then repairs and maintenance is also one kind of expense only. Then you have commission received. So any commission received is what? It is an income. Okay, anything received is your income. Commission received is income. Copyright. I had told you any asset which is tangible or intangible both come under the asset account. Copyright क्या आपका asset है? Yes, copyright is an asset. इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है. गुडविल, ऑब्वियसली गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट. इंटेंजिबल एसेट, सो दिस विल ऑल्सो कम अंडर द एसेट अकाउंट. देन यू हैव बिल्स पेबल. बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी. बिल्स पेबल क्या होता है अगर आपको पता नहीं है, अभी के लिए इतना समझ लिए. आपका जो क्रेडिटर है उसको आपने लिख करके प्रॉमिस करके दे दिया दैट वी आर गोइंग टू पे यू द अमाउंट ऑन सो एंड सो डेट. सो दैट पेपर इज कॉल्ड बिल्स पेबल. सिमिलरली अगर दिस पेपर इज रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम योर डेटर, सो दिस विल बी कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल. देन यू हैव बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है गिवन बाय बैंक. सो ये भी आपकी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट. देन कैश एट बैंक. कैश एट बैंक डेफिनेटली क्या है? हमारी एसेट है, लिक्विड एसेट है. देन हमारे पास है कैरिएज. व्हाट इज कैरिएज? कैरिएज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, मतलब कि कैरिएज ऑन परचेज हो चाहे कैरिएज ऑन सेल्स हो, दोनों ही केसेस में व्हाट इज कैरिएज? कैरिएज इज योर एक्सपेंस. देन बैंक लोन. बैंक लोन तो नाम से ही पता चल रहा है इट्स अ लाइबिलिटी. हमको किसी को पे करना है तो ये रहा बैंक लोन, एंड बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी. डिस्काउंट अलाउड. हमने किसी और को डिस्काउंट अलाउड किया तो ये क्या है? एक्सपेंस एंड लॉस. ओके, लॉस एक तरह का अलाउड. Discount allowed will come over here. Discount allowed is your expense. Then interest received. So obviously interest received is what? It is income. So any income received comes under the revenue account. ठीक है. चलिए, तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया? हमने ये सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लिया इनटू दीज 5 डिफरेंट कैटेगरीज. देखा कितनी आसानी से हो गया और कितना इजी है. अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. तो ये 5 कैटेगरीज में हमने इन अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लिया. अगर अब बस हमें इसकी आगे जर्नल एंट्री करनी होगी तो क्या करना है? सिर्फ हमें डेबिट एंड क्रेडिट का रूल याद करना है. एक बार फिर से याद दिला दूं, हमने पिछले क्लास में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल किए थे. उसमें हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे. ग्रुप नंबर 1 हमने बनाया था जहां पे एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को एक साथ रखा जाता है. एंड ग्रुप नंबर 1 का रूल है डेबिट होती है एनी काइंड ऑफ इंक्रीज एंड क्रेडिट इज एनी काइंड ऑफ डिक्रीज. एंड फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया था, उसके अंदर हमने रखा था लाइबिलिटी को, रेवेन्यू को और कैपिटल को. लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल तीनों का ही एक रूल लगता है, वो ये है एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड एनी डिक्रीज इज डेबिटेड. ओके, तो आपको ये रूल बार बार रिवाइज करने हैं बच्चों, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बैठ जाए. और एक बार आपने अगर इनको अच्छी तरीके से लर्न कर
लिया देन आपको जर्नल एंट्री करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज दिस रूल्स आर वेरी फंडामेंटल। ये अगर आपको आ गए और आपने क्लासिफिकेशन ठीक से सीख लिया तो फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। प्लीज रट्टा मत मारना, आराम से सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग अवर जर्नल एंट्री, जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। अब आपने सारे रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्री करना डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे, फॉर्मेट सीखेंगे, नरेशन क्या होता है ये देखेंगे, एंड वी विल स्टार्ट डूइंग अवर जर्नल एंट्री, फर्स्ट क्लासेस ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं।